Hello kids, how are you? Okay, today let me start the chapter number 7. And the chapter name is The Magic of Mathematics. And the chapter name is Mathematics. What do you meaning of this topic name? Magic. Magic in mathematics. When we call the magic of mathematics, it means we can fast and fast. We can fast as fast the calculations also. Yes and no? जब हम किसी कैलकुलेशन को फास्टली कर लेते हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम? मैजिक मैथमेटिक्स. ओके, सो इन द मैजिक मैथमेटिक्स यूजिंग द वैदिक मैथमेटिक्स ऑल्सो. कौन सी मैथमेटिक्स यूज करता है? वैदिक मैथमेटिक्स यूज करते हैं इसमें, जिसमें हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन बहुत फास्टली सॉल्व कर सकते हैं विदाउट कैरिंग बोरोज. ओके, सो लेट मी स्टार्ट. So the first point is a warm up in. Okay, this chapter helps you think faster, sharper, and smarter every day. Okay, is the this aim of this chapter also, क्योंकि वैदिक मैथमेटिक्स का यूज करने से हमारी कैलकुलेशन स्ट्रांग होती है. ओके, एंड द वार्म अप एक्टिविटी फॉर दिस, Kyra and Sophia to a toy shop. Kyra, Sophia, let us busy a box to turn टेनिस बॉल्स. किसमें बिजी है? टेनिस बॉल्स परचेज करने में बिजी है. ओके, एंड द सोफिया टू द शॉपकीपर, हाउ मेनी टेनिस बॉल्स आर देयर इन वन पैकेट. जो सोफिया है वो पूछ रही है शॉपकीपर से कि वन पैकेट में कितने टेनिस बॉल्स. ओके, द शॉपकीपर सेज ईच पैकेट कंटेन 12 टेनिस बॉल्स. हर एक पैकेट में कितनी कितनी बॉल्स है? हाउ मेनी बॉल्स आर? 12 बॉल्स. ओके, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ वन टेनिस बॉल? तो वन टेनिस बॉल की कॉस्ट कितनी है? तो वन टेनिस बॉल की कॉस्ट कितनी है इसमें? 18 रुपीज. द वन टेनिस बॉल कॉस्ट इज 18 रुपीज. सो द सोफिया से कायरा, इफ ईच बॉल कॉस्ट 18 रुपीज, हर एक बॉल की कॉस्ट कितनी? 18 रुपीज है. सो देन हाउ मच वी विल हैव टू पे फॉर वन पैकेट. तो तुम कितने रुपीज में वन पैकेट परचेज कर लोगी? कायरा से पूछ रही. ओके, and Kyra say it is very easy to calculate. मैं इजीली कैलकुलेट कर सकती हूँ. वी विल हैव टू पे 18 मल्टीप्लाई टू इक्वल टू 216 रुपीज. अब इसने बहुत इजीली सॉल्व कर दिया, कोई फिंगर से ओपन नहीं की. तो कैसे किया? सो सोफिया सेज कायरा यू आर सो स्मार्ट. तुम तो बहुत स्मार्ट हो. सो नाउ टेल मी हाउ मच वी विल पे टू हैव 3 सच पैकेट्स. तो मुझे 3 पैकेट्स कितने में परचेज करने पड़ेंगे? तो कायरा सेज it is also multiplied by 3 also, so we get the cost of 3 packets. Yes and no? Yes, yes. So the cost of the 3 packet is 648 rupees. How many? How much amount? 648 rupees. So Sophia say you are doing calculation very fast. तुमने बहुत calculation very fastly की है. So can you please tell me the trick you are using? तुम कौन सी ट्रिक यूज कर रही हो मुझे बताओ. Then the Sophia say, Kyra say, why not? क्यों नहीं? I will teach you Vedic mathematics. तो मैं तुम्हें क्या सिखाऊंगी? Vedic mathematics सिखाऊंगी. Okay, that we help you to do calculation easily and with fun. So first of all, for the Vedic mathematics, have to understand the terms also, just like ekadikain purvain, ekanin purvain also. Okay, so let me start. So first is ekadikain. Then the first thing is, and the ekadikain means the one digit more or number. The one more digit or number. जब हमें कोई नंबर गिवन है उसका एकदिकेन बताना, तो सो वी कैन ऐड दिस वन ओनली. कितना ऐड करना है? 1 ऐड करना है. कितना ऐड करना है? 1. सो So to find ekadik of a number, add 1 to that the number and mark on its unit digit as a dot. जिस नंबर का मुझे एकादिकिन बताना है उस नंबर पे मुझे क्या लगाना है? डॉट लगाना है. On the upper side. Which side? Upper side. And after that we can add plus 1. Okay, add 1. So just like example is 12.
Put the mark on 12 is just like as 12 plus 1, 13. 1, 5, 3, 4. Put the mark on 3. किस पे लगाया मैंने मार्क? So 1, 5, 4, 4. Okay? किसमें ऐड किया मैंने नंबर? 3 में ऐड किया. 3 plus 1 is 4. Then the number is 1544. Then the next is find ekadik. Find ekadikane of the following number. So ekadik of 0. Ekadik of 0. So put the dot on 0. So 0 plus 1 is 1. 0 plus 1 is ekadik of 9. So 9 पे लगाया मैंने dot. So 9 plus 1. 9 plus 1. Ekadik of 12. So put the mark on 2. So 12 plus 1. 12 plus 1. Ekadik of 15. Put the mark on 5 also. So then the value is, I have already given the 3 numbers in this ekadik. Ekadik of 17 just like 18. Ekadik of 33 just like 34. And ekadik of 49 is the 50 also. Okay. Then the next text is ekadik of 52. So put the mark on 2. Then the value is 53. Okay. And the next is ekadik of 69. So put the mark on 9. Then the value is 70. Okay. Then the next is ekadik of 70 equal to 71. Ekadik of 89. Put the mark on 9. And the value is 90. So yes, Yashasvi. Put the ekadik on 99. Then the value is, and the ekadik mark on 9. And the value is, clap for Yashasvi. Okay. Then the next is Alkendra. Ekadik of 27. Put the mark on which number? Put the mark on which number? 2 or 7? 7. So put the mark on 7 and we get the answer is 28. Clap for Alkendra. Okay. And the next term is Ekadikane Purvain. Ekadikane Ekadikane Purvain is a combination of 2 words. Ekadikane means by one more, yes and no. And the Purvain means that the previous one. जिस नंबर का मुझे पूर्वेन बताना है उसके आपको जो नंबर गिवन है उसके जस्ट पहले वाले नंबर को आपको क्या करना है? एकाधिक करना है. ओके. दिस द मीनिंग ऑफ दिस नंबर एकाधिकेन पूर्वेन, प्रीवियस नंबर्स को वन मोर करना है, यानी प्रीवियस नंबर्स को वन ऐड करके बताना है. ओके. सो जस्ट टाइप दैट द एकाधिकेन पूर्वेन मीन्स इज बाय वन मोर देन द प्रीवियस वन. जो भी पहले वाला नंबर है उसको हमें कितना ऐड करना है? 1. ओके. So let me start. Just like the for example, if we have to find the ekadhikan purvain of the digit in the 32, किस डिजिट का फाइंड आउट करना है? एकदिकेन पूर्वेन 2 का. किसका फाइंड करना है? तो एकदिकेन पूर्वेन में किस डिजिट का एकदिकेन पूर्वेन फाइंड करना है? 2 का. तो 2 से पहले कौन है दिस नंबर? 3. तो मैंने 3 पे क्या लगाया? डॉट. एंड द नंबर इज 42. Then the number is 42. Okay. Let me start the exercise. Find ekadhikan purvain of the following numbers. Just like this. Ekadhikan purvain of 5 in the number of 154. So 5 is on the middle side, middle number. Mid number, so put the ekadhikan mark on 1. Put the ekadhikan mark on 1. Then the value is 254. Okay. Ekadhikan purvain of 6 in the number. 6 is the this one. इसके पूर्वेन में कौन सा नंबर है? Which one? 1. So put the ekadhikan mark on 1. Then the value is 26. Next is ekadhikan purvain of 3 in 135. So put the mark on 1. Then the value is 235. Then the next is ekadhikan purvain of 6 in the number. 6 on the
स्टार्टिंग नंबर ऑल्सो. सो इसके आगे मुझे क्या राइट करना है, 0 राइट करके क्या लगाना है, एकाधिक मार्क. ओके, देन द वैल्यू इज 169. Then the value is next is ekadikin purven of 7 in the number of 17. So put the ekadikin mark on. Yes, Pragya? 1. Then the value is? Yes, clap for Pragya. 27. Okay. Then the next value is ekadikin purven of 2 in the number of 32. Yes, Priyal? Put the mark on. 3. Then the value is 42. Very good, Priyal. Clap for Priyal. And the next is ekadikin purven of 1 in the number of 107. Yes, Nitish. Put the ekadikin mark, ekadikin purven. No. 0. So put the ekadikin mark on 0. Then the value is 107. Very good. Clap for Nitish. Yes, Devyan. Set. Devyan. Ekadikin purven of 9 in the number of 279. 7. Put the ekadik mark on 7. Then the value is? Okay. Clap for Devyan. 289. Sit down. Next is ekadikin purven of 9 in the number of 159. Yes, Karthik. Put the ekadikin mark on. And then the value is 169. Clap for Karthik. And the next is ekadikin purven of 7 in the number of 79. Yes. Pahal. Put the ekadikin mark on. 0. And the value is 179. And the next is ekadikin purven of 1 in the number of 128. Yes. 1 पे लगाना, 1 के पूर्वेन में कुछ है नंबर, so write the 0. Okay, and put the ekadikin mark on 0. And then the value is 1100. Okay, eka न्यूनन. Then the next definition is eka न्यूनन. It is opposite process of ekadikin. ये किसका प्रोसेस है अपोजिट? एकदिकेन. एकदिकेन में हम क्या करते हैं, 1 प्लस एंड एकान्यून में -1. ओके, and in ekanunen we decrease 1 from a particular digit or from a particular digit of a number and then particular digit has a dot below it. अब हमें डॉट्स का लगाना है, अपर साइड एंड बिलो साइड्स, बॉटम साइड से लगाना. ओके, just like ekanunen of 12, so put the mark on 2. Okay, put the mark in 2. Then the 12 is 12 minus 1 equal to 11. Okay, and the ekanunen of digit 3 in the 1534. Put the ekanunen mark on 3. Okay, then the value is 1524. Okay, decrease the value by 1. Then the next is, let me start the exercise. And extra bytes are Vedic mathematics is based on 16 सूत्र यानी formulas and 13 सब सूत्र. What is the meaning of this? Vedic mathematics जो methods है कितने सूत्र पे बने हुए हैं? 16 तो formulas है and 13 are sub formulas. Okay, and then let me start the exercise. First is find ekanunen of the following numbers. Ekanunen of 9. So put the ekanunen mark on 9. So 9 minus 1, 8. Put ekanunen of 15. Then the value is 14. Okay. Yes, Ashish. Ekanunen of 20. 19. Ekanunen of 30. Harsh. 29. So ekanunen of 30 is
29. Take your seats. Yes, J. Eka union of 45. 44. Okay. Yes, Faz. Eka union of 75. So put the Eka union mark on 5. Then the value is 74. 87. Yes, Sonia. Take your seats, beta. Take your seats. 87. So put the Eka union mark on 7. Then the value is 86. Next is Eka union of 90. Give me the answer of this. Eka union of 90. 89. Take your seats. Yes, Pragya. Eka union of 128. Put the Eka union mark on. And the value is. Yes, clap for Pragya. Eka union of 225. Divanshu. Put the Eka union mark on 225. And the value of 224. Sit down. Devyan. Okay. Eka union of 262. On the 2. And the value is 261. Clap for Devyan. Arav. Take your seats. Eka union of 628. To put the Eka union mark. Which number? 8. Then the value is Arav. Yes, 620. Okay. Clap for Arav. Sit down. And the next value is Eka union. Eka union Purvain. And what is the meaning of this? Eka union means one less, and the Purvain means before or previous. Okay. So Eka union Purvain means then the numbers that comes just before the given number after subtracting 1. It's a way of describing the immediate procedure of the number. जो भी नंबर हमें गिवन है उसका हमें क्या करना है, उसे जो प्रीवियस वाला नंबर है उसका हमें क्या करना है, एका यूनियन पूर्वन बताना है. ओके, गॉट इट? सो लेट मी स्टार्ट. फॉर एग्जांपल, एका यूनियन प्रिवेंट और डिजिट 7 फॉर द नंबर 372. सो विच नंबर? पुट द एका यूनियन मार्क ऑन 3. यस एंड नो? Then the value is 272. Okay. So let me start exercise. Eka union Purvain of the digit 9 of the number 29. So what is the previous value of the 9? 2. Then the value is 19. Okay. And the Eka union Purvain of the digit 7. They will sit properly. Of the digit 7 for the number 27. So which number on the before the 7? 2. So put the Eka union mark on 2. Then the value is 17. Okay. And the next is Eka union Purvain of the digit 3 for the number of 113. Avik. Put the Eka union mark on. Then the value is 100. Take your seats. Clap for Avik. And the next is Alkendra. Eka union Purvain of the digit 5 for the number 115. Of the digit 5. So which number? Eka union Purvain. 1. Then the value is what? 105. Take your seats. 105. And the next is Eka union Purvain of the digit 8 of the number. Yes, Pihu. 6. Put the Eka union mark on. Then the value is 158. Take your seats, beta. Arav. Eka union Purvain of the digit 5 for the number of 825. So put the Eka union mark on. Which one? 2.
So put the equal mark on 2. Then the value is, yes, 815. Then the answer is 815. Okay. Then the next is Ekan Yun Purvain of the digit 5 for the number. Just take your seat, Aro. 2915. Pahal. Which number? 1. So put the equal mark on 1. And the value is 2905. Take your seats, beta. And the next is Harsh. Ekan Yun Purvain or the digit 0 for the number 5210. So put the equal mark on. Put the equal mark on. 0 का तो पूर्विन बताना है. What? Yes. Then the value is? Yes, take your seats. 5200. Okay. And the next definition is the complementary digit. The next term is complementary. What is the meaning of this? Do you know? Complementary digits के लिए जो भी हमें नंबर या जो भी हमें डिजिट्स गिवन है उसका डेविएशन बताना 10 से कितना डिफरेंस आ रहा है. जस्ट लाइक 7. Complementary digit of 7. 3. Yes and no? Complementary digit of 2. 8. Complementary digit of 5. Okay, got it? So जो भी हमें नंबर गिवन है उसका हमें 10 से लेस करके जो वैल्यू आएगी विदाउट साइन, सो इज द कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट. ओके. एंड जब हम डिजिट्स को डेविएशन के अकॉर्डिंग तो साइन के अकॉर्डिंग बताते हैं कि साइन के अकॉर्डिंग कौन सा लेस देन या ग्रेटर देन है. पर इसमें क्या होता है, ओनली आपको साइन बताना है. ठीक है, ओनली आपको डिजिट बतानी कितना डेविएशन इसमें चल रहा है. So that just like complementary digit is a digit when added to a given digit make the sum equal to a specific base such as 10. जो बेस है या तो 10 होगा या 100 होगा. According to the syllabus, base are two types, 10 and 100. जब हमारा बेस 10 है तो हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट होगा 10 से डिफरेंस होकर निकलेगा. ओके. जस्ट लाइक हमें किसका डिजिट का बताना है, कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट ऑफ 8. तो 10 से कितना कम है, 2. Then the answer is 2. Complementary digit of 7, 3. Complementary digit of 6, 4. Complementary digit of 9, 1. Complementary digit of 10, 0. Has no difference. Okay, got it? So let me start. Addition using Vedic mathematics. Which method? It means ekadikmal, ekadiken. Okay, it means ekadiken have to solve. Use no carries. For the addition have no use no carries and use a dot only. किसका यूज करेंगे हम? Dots का यूज करेंगे. Okay, so let me start. 46 plus 27. 6 plus 7 equal to 13. So write the 3 on this side and put the ekadiken mark on 2. Okay, then the value is 2 plus 1. 2 plus 1. Then the 4 plus 3 is 7. Then the value is 73. Okay, हमने कैरीज का जगह किसका यूज किया है, डॉट्स का. किसका यूज किया है, so have to write the steps in this method. Add the unit digit 6 plus 7. हमने किसको ऐड किया, unit digit which one, 6 plus 7. Then the value is 13. Here 13 is more than 10. अब जो 13 है वो more than 10 है, yes and no. So write the 3 on the this side and now put ekadiken symbol R over the 2 of the digit. किसके ऊपर लगाना है मुझे, 2 के ऊपर. किसके ऊपर लगाना है, put the ekadiken mark on this and the 2 plus 1 equal to 3. Yes and no. So write the sum of the 10 digit. 4 plus 3, 4 plus 3, 7. Then the value is 73. Got it? So let me start the exercise. Eight plus 1 is not more than the 10. No.
So write on this side already. Okay. 3 plus 1, 4. 2 plus 4, it's too easy. इसमें कोई कैरी नहीं है, कोई एकाधिकन मार्क नहीं है. And 6 plus 4, 10. So write the 0 on this side and put the एकाधिकन mark on this one. Okay. जो जस्ट इससे पहले वाला नंबर है उस पे क्या लगाना है मुझे? एकाधिकन मार्क लगाना है. Okay, got it? And the next is 7 and 8 plus 1. So 7 plus 9, 16. So write the 6 on this side and put the ekadikin mark on this. Okay. And 5 plus 1, 6. 6 plus 5. आगे कोई number नहीं तो have to write the 11 also. Okay. Do you understand? Okay. Okay. Next is Ashish. 4 plus 0. Have no dots. 3 plus 2. 5. And 2 plus 1. Then the value is 354. Yes, you know, take your seat, beta. 354. And the next is 730 plus 324. So 0 plus 4. 0 plus 4. 3 plus 2. 5. And the 7 plus 3. Have no Ekadikin mark on these numbers? No. It's a simple way of this addition. 6 plus 6. 12. Yes. 12. 6 plus 6. So write on the 1 dot. On which number? No. 2. On the 2. Then the value is 2 plus 1 and 5 plus 3 is a single value. Okay. And 2 plus 3, then the value is 5. Take your seats. Yes, Priyal. 1 plus 9, 10. So write the 0 on this side and 1 dot in 8. 8 plus 1 and 9 plus 0, 9. And the 5 plus 6, 5 plus 6. Okay, then the value is 1000. Okay, very good. Take your seats. And the next, Nitish. 1 plus 7, 8. Have no dots. 4 plus 3, 7. And 5 plus 2, 7. Okay, very good. And take your seat, Peter. Have no dots here. And the next value is 387 plus 485. So 7 plus 5, Pihu, 12. So put the Ekadikin mark on 8. 8 plus 1, 9 plus 8, 70. Write the 7 and dot is 4. 4 plus 1, 5. 5 plus 3, 8. Then the value is 870. Let's take your seat, beta. And the subtraction using Vedic methods. Okay. So first is, can you subtract 5 minus 9? No. So हमें क्या करना है, जो नीचे वाले नंबर से हम लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट. क्या लेते हैं? So 9 का कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट कितना होता है? 1. अब जिस नंबर का मैं कॉम्प्लीमेंट्री लूंगी उसे आगे वाले में मुझे क्या लगाने हैं? डॉट्स लगाने हैं. ठीक है. एंड आफ्टर दैट जो मैं कॉम्प्लीमेंट्री ले रही हूँ उसको हम माइनस नहीं करेंगे. क्या करेंगे? अपोजिट क्या होता है? प्लस. माइनस का अपोजिट क्या है? मैं माइनस तो कर रही, पर जिस नंबर का मैंने कॉम्प्लीमेंट्री निकाल लिया उस नंबर का मैं माइनस नहीं करूंगी. क्या करूंगी? ऊपर नंबर से प्लस करूंगी. ओके. जस्ट लाइक 9. 9 का कॉम्प्लीमेंट्री इज, so 5 plus 1, 6. Then the value is 6. And put the Ekadikin mark with. Okay.
and then put the ekadikit mark on 5. Okay, put the ekadikit mark on, then the value is 6. Can you subtract 3 minus 6? No. So put what is the complementary digit of 6? 4 हो गया. Yes and no. अब ऊपर नंबर क्या है हमारा? 3 and the complementary digit of 6 is 4. So 3 plus 4, 7. Okay. अब मैंने complementary digit निकाला इसका, तो put the ekadikit mark on this again. Okay. Then the value is 5. 4 plus 1 is 5. And can we subtract 9 minus 5? Yes and no. So 9 minus 5 is 4. 476 the answer also. Okay. अब इसको हम राइट कैसे करते हैं? Look at the board. हम स्टेप्स कैसे राइट करेंगे? Then the value is 935, 459. Is the value is okay. Look at it. Look at the board. Look at the first digit 5, which is less than 9 also. Yes and no. 5 value किससे less है? 9 से less है. So 9 cannot be subtract from 5. So 9 5 में से 9 subtract नहीं हो सकता है. क्या लिखा मेरी फर्स्ट स्टेटमेंट लाइन क्या होगी? Then the value is less than also. Then the 9 cannot be subtract from 5. Okay. For the step, add the complementary digit of 9. That is 1. That is 1. And add this number 5 plus 1, 6. Okay. अब हमारा नंबर क्या है? मैंने कॉम्प्लीमेंट्री किस डिजिट का निकाला था? Wait. For the Eken union Purvain, put the Eken union mark on the upper values also, and Ekadikit mark on the lowest values also. Okay. Ekadikit mark किस पे लगता है? Lowest वाली वैल्यू पे नीचे ऊपर लगता है, और Eken union mark upper side से जो वैल्यू राइट होती है उनके नीचे लगता है. ठीक है. तो look at the board. हमने डिजिट ऑफ 9 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना हुआ? 1. एंड पुट द Eken union mark on 3. 3 पे लगाया. 3 के नीचे क्या है? डॉट लगा दिया. Yes and no. Okay. और 3 minus 1 is 2. अब 2 है तो 5 भी सब्ट्रैक्ट होता है क्या? Wait. 3 minus 1 is 2. Can you subtract 2 minus 5? No. So using the complementary digit. Complementary digit of 5 is 5. And ऊपर वाली वैल्यू कितनी है हमारी? 2. तो 2 plus 5 is 7. 2 plus 5 is, and again put Eken mark on 9. Okay. 9 minus 1 is 8. 8 minus 4 हो सकता है. It's possible also. Yes and no. Then the value is 8 minus 4 is, then the value is 476. Have the two method of this questions solved to this questions. First is Eken mark on, and the second is Eken union method also. ठीक है. तो subtraction किसका यूज किया है मैंने अभी इसमें? Eken union. Which method? Which method? Eken union. Okay. So let me start the exercise. Have to write the answers only. Have no describe this steps also. Okay. Look at this. Can we subtract 2 minus 9? So the complementary digit of 9 is, and 2 plus 1 is 3. 2 plus 1 is, and put Eken union mark on 7. 7 के नीचे लगाना. Eken union का लगता है upper values के नीचे. Got it? Eken union mark on 7. 7 minus 1 is, can we subtract 6 minus 9? No. So again using the complementary digit of 9. Digit of 9 is 1. And this value is 6. Is the Eken union mark on also 7. So the value is 6. 6 plus 1. 7. Okay. And the put the Eken union mark on 3. 3 minus 1 is, can you subtract 2 minus 1? Then the value is, I have to write the answer and dot also. And the next is 582 minus 197. Can we subtract 2 minus 7? So using the complementary digit of 7 is 3. And the 2 plus 3.
2 plus 3, अब मैंने किस नंबर का कॉम्प्लीमेंट्री निकाला? 7 का. So put the equivalent mark on 8. Okay. 8 minus 1 is 8 minus 1 is 7. 8 minus 1 is, speak all of you. Can we subtract 7 minus 9? Then the put, what is the complementary digit of 9? 1. And the 7 plus 1. So write the 8. And put equivalent mark on 5 also. 5 minus 1 is 4. Is a 4 and minus 1 is already right. Can we subtract? Then the 4 minus 1 is right now. Can we subtract 5 minus 9? Yes and no. So what is the complementary digit of 9? What is the complementary digit of 9? 5 plus 1. 6. And put equivalent mark on 5. Okay. 5 minus 1 is 4. So what is the can we subtract 4 minus 7? So what is the complementary digit of 7 is? 4 plus 3. 7. And I put the equivalent mark on 3. 3 minus 1 is 2. And 2 minus 1 is? And the value is 176. Okay. And the next is 8 minus 9 is possible. So put the, what is the complementary digit of 9? And 8 plus 1 is? 8 plus 1 is? And put the equivalent mark on 3. 3 minus 1 is 4. Yes, 3 minus 1 is 2. Can you subtract 2 minus 5? So put the, what is the complementary digit of 5? 5. 5 plus 2. 5 plus 2. And put the equivalent mark on 9. And 9 minus 1 is 8. 8 minus 3 is possible also. Then the value is 5. Then the value is, and the next is, can we subtract 2 minus 4? Yes and no? Arav, yes and no? So what is the value of complementary of 4? Arav. Yes? Complementary of 4. 6? So 2 plus 6? Arav is the answer only. Yes? 8. And equivalent mark on? 3 or 7? 3 or 7, Arav? Huh? 3. And 3 minus 1 is? 2. Can you subtract 2 minus 7? Yes and no? Can we subtract 2 minus 7? So using the no complementary digits. So what is the complementary digit of 7 is? Complementary digit of 7 is? Yes, sir. Arav, give me the answer. Complementary digit of 7. Subtract by 10. 10 minus 7. 2. 10 minus 7. 3. So 3 and 4, 2. 5. And the put the equivalent mark on 6. 6 minus 1 is? Can we subtract 5 minus 2? Can we subtract 5 minus 2? No. Yes. And 5 minus 2 is? Then the value is 350. Take your seats. And class, do you understand this question? Yes and no? Yes and no? Okay, this chapter is completed. And give the answer of this question in the comment box also. Okay, had to same as इसी मेथड से हमें सॉल्व करना है. And give the answer in. Okay, have a nice day.